we have the arrival of Professor Dr. Renu Vik. She is currently the Vice Chancellor of Punjab University. Accompanied by Dr. Baldev Sethia, Director of Punjab Engineering College, and President PECOSA, Mr. Bali, and fellow alumni members and executive committee members. Please give a big round of applause. We are so many in the auditorium, but we can't hear you well. Kindly come inside the hall and close the door a bit. So move on to the seats. Seats are there. Good evening, ladies and gentlemen. This is your host Sandeep Bhargav with co-host Dipanshu. Good evening, everyone. My name is Dipanshu Gautam from second year electrical. I am an alumni of this college itself, 1982 from electronics. Welcome you all to this evening. On behalf of PECOSA, I welcome you all to the Padma Bhushan late Shri Jaspal Bhatti ji cultural evening for remembering, honoring and celebrating the life and his achievements of the great legend engineer Jaspal Bhatti ji. He was also referred as the king of comedy, who brought a revolution in the area of comedy and humor in this country long ago. Jaspal ji lived his life from March 1955 until October 25, 2012, wherein in an unfortunate incident he had to leave us, but he's all around us every time, every moment, every second of the day. He incidentally was a graduate of this college of electrical engineering. He passed out in 1978. Ultimately, he was a film and TV personality known for his satirical take on the problems of the common man. He is also fondly remembered as comedy's Sardar-e-Azam. I would now request the dignitaries to kindly stand up and come for the lighting of the lamp, which we seek divine blessings of the God before we start any event today. I would request Vice Chancellor Professor Dr. Renu Vik, Mrs. Savita Bhatti ji, Director Professor Dr. Baldev Sethia ji, Dean Professor Dr. Rakesh Kanda ji, Head of Alumni Corporate and International Relations, Dr. D.R. Prajapati, Dean Student Affairs, President PECOSA Shri Tikam Chandra Bali ji, Vice President PECOSA Ashok Rashad ji, and Sajeev Modgil, Joint Secretary PECOSA. Kindly come around the lamp lighting area. Matchbox, please. कहा जाता है कि lighting of the lamp removes darkness, ignorance, unhappiness, and helps spreading the Almighty's grace and divine energy in the surroundings. The lighting of lamp is regarded as a go down to knowledge right in this campus. Thank you.
Yes. Thank you. Thank you, everybody. Shubham Karoti Kalyanam, Arogya Dhan Sampada, Shatru Buddhi Vinashaya, Deepa Jyotir Namostate. We start with the proceedings of the day. I would request Mr. Tikam Chandra Bali, President of PECOSA, for his welcome address. Mr. Bali, please. Honorable Chief Guest, Engineer Renu Vidji, Vice Chancellor, Punjab University, Chandigarh. Honorable Chief Guest of Honor, Mrs. Savita Patti ji, wife of late Engineer Jaspal Patti. Honorable Director PEC and Patron PECOSA, Dr. Professor Baldev Setia ji, Professor Dr. Rajesh Kanda, Head Alumni Corporate and International Relations, all the faculty members of PEC, young and budding engineers of the PEC, my PECOSian friends over here, and those who have joined online from different parts of the world, students performing in the cultural evening, distinguished guests, ladies and gentlemen, I welcome you all to this gala and grand cultural evening being celebrated in the memory of King of Comedy, Engineer Jaspal Singh Patti. Due to COVID pandemic and some other circumstances, we could not celebrate the Jaspal Patti Culture Evening for the last 3 years, which otherwise is being celebrated every year. Now, with the sincere efforts of the present PECOSA team, PEC faculty, with the effective cooperation and participation from the students of the institute and from the guidance given by Mrs. Savita Patti, we have been able to organize this culture evening to pay our respect and tributes to that great and excellent comedian, actor, and satirist, late Engineer Jaspal Singh Patti. Though Jaspal Singh Patti needs no introduction, as he is world-famous personality in the field of comedy and satirist takes, yet I am seeing a large number of our young crowd over here from our alma mater who may be inquisitive about him. Let me tell you that Jaspal Singh Patti was an Indian television personality known for his satirical takes on the problems of the common man. He is most well known for his television series Flop Show, Full Tension, and mini capsules Ulta Pulta, which ran on Doordarshan, India's national television network, in the late 1980s and early 1990s. He carried out various anti-corruption crusades in Chandigarh. His frontal attack on
issues like red tapeism, nepotism, and corruption was both comic and awakening for masses. Born in 1955 at Amritsar, graduated from PEC as an electrical engineer in the year 1978, he was famous for the street plays like My Nonsense Club during the college days. Most of these plays were spoof ridiculing the corrupt in the society. I was fortunate to witness and enjoyed these many a times in the Central Plaza of Sector 17 in those days of 1970, 80 and 1990. For a short while, he was also a cartoonist for the Tribune newspaper. He acted and directed immensely popular TV series like Ulta Pulta and Flop Show on TV, which brought him into the limelight, and he became the most popular social satirist of India. He was gifted with inducing humor to highlight everyday issues of middle class in India. I remember while watching his first directorial full-length movie, Mahal Theek Hai, in the year 2000, along with my co-brother, Brigadier Harbeer Singh, who is also sitting here and later giving some performance on mouth organ also. We have to go out of the hall to avoid severe cramps in our stomach due to uncontrollable laughs and laughters. He acted in numerous Hindi and Punjabi movies, TV serials, and stage shows. And to recognize his contribution in the field of arts and culture, Government of India awarded him the highest civilian award of Padma Bhushan in the year 2013. Jaspal Singh Bhatti got married to Savita Bhatti in the year 1985. Both of them worked together in a number of TV serials and films. Mrs. Savita Bhatti is here sitting among us with today to pay tribute to this great legend and actor. We welcome her from the core of our being. Though the king of comedy, king of satire, cartoonist, humorist, actor and filmmaker is no more, yet he shall remain in our hearts and mind forever. Now here, I would like to emphasize that there is a long and persistent outstanding demand from the PECOSA as well as from all the fans of Jaspal Bhatti. This regard of our camps and other also introduce a few prizes on the basis of best performances. A healthy competition in this regard shall improve the quality of the performance. This is just an idea, food for thought, and we will deliberate upon this in our executive committee and also with Mrs. Savita Bhatti and PEC authorities. Before concluding my address, I once again welcome Professor Dr. Baldev Setia, Director PEC and Patron PECOSA, who is really acting like a father figure to us, extending every help and permission to execute different events. His sporting and cordial relationship with PECOSA, easy and convenient accessibility to us whenever required is praiseworthy. We are very grateful to him to give the permission to hold this cultural evening as per our convenience. In the end, I assure you that all of you are going to enjoy a colorful and vibrant cultural evening where the young artists of the PEC have put their full energy with mind, body and soul. Please enjoy the evening. Thank you all for being a part of this amazing cultural evening. Thank you. Thank you, Mr. Bali, for an insightful speech and your request to name this auditorium in memory of Shri Jaspal Bhatti ji, I think which
a lot of people in the auditorium echo the same request, as well as a lot of viewers on YouTube who are watching this online live have the same work we do or video we show to you. Engineer Jaspal Bhatti, a man of great wit, humor and intelligence, who made us laugh and think with his insightful and satirical commentary on society. A proud alumnus of Punjab Engineering College, he was not only a brilliant comedian but also a talented engineer. See the way he developed himself. He first did his engineering, but then the comedy came first. He became a brilliant comedian and a talented engineer. His contribution to the Indian comedy and entertainment cannot be overstated. He used his platform to bring attention to important social issues and inequalities, always with a sharp and humorous perspective. He was a true pioneer who paved the way for many comedians and satirists to follow. His life and career serve as an inspiration to all of us. He taught us the importance of using our skills and talents to bring about positive change in society and to never lose our sense of humor along the way. Entering into the college in 1978, we still remember his few plays on the engine here in the college. He took some of our colleagues for हाथ पीले करके, क्योंकि उस टाइम डाउरी का बहुत चलता था, तो लड़कों के हाथ पीले करके 17 सेक्टर ले गए थे कि भाई चलो लड़कों के हाथ पीले करेंगे. So his ways to communicate all these things were very, very different, very novel. For example, there were a lot of dowry happening, so he had plays Bridegroom on Sale, for example. Black marketing पे बहुत चलता था, हवाला पे बहुत चलता था, उस पर भी उन्होंने प्ले किए. Adulteration पे उन्होंने टॉपिक चुना, और हैवी स्कूल बैग्स, मतलब बच्चों तक भी उन्होंने देखा कि बच्चे स्कूल के बोझा ले जाते हैं, उस पर भी उन्होंने एनेक्ट किया और उसको एक अच्छे रूप में पेश किया. तो उनका तरीका, उनका इस तरह से ह्यूमर से कन्वे करना बहुत ही एक अच्छी चीज़ थी सोशली. We hope you all enjoyed this video and remember him very well. Now hold your seats, ladies and gentlemen, and get ready to witness a mesmerizing blend of rhythm, grace and emotion as the Dramatics Club present their highly anticipated dance performance. With the stunning choreography and a cast of talented dancers, this is a show you won't want to miss. So please cheer them with a huge round of applause. Just hold on, seems to be a technical error which can happen anywhere, anytime. Hold on, please. से दुनिया का क्या है पता है फकीरा दिल ये खुदा भी मिल जाए तो क्या थोड़ी मनमानियाँ हो थोड़ी नादानियाँ हो शरारतें भी थोड़ी जरा थोड़ी बेईमानियाँ हो दूर परेशानियाँ हो जाके दुनिया से कह दो जरा
मलू गुलाल रंग बता ब्लू या लाल एयर में तेरे उड़ते बाल आजा रंग दू दोनों गाल अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा बेबी के देखे झुमके लगाते चार ठुमके छिछोरे नाचे जमके रे यूपी में दिन दहाड़े विंडो और छत पे ताड़े हम देखे आंखें फाड़े रे तुझको बना करके तुझको बना करके तुझको बना करके ले जाएंगे बारी की दुल्हनिया तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया बचना ए हसीनो तो मैं आ गया ए बचना ए हसीनो तो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा नचती तूफान सी हर एक ठुमका क्यों सता रही रुक 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 उसको पता जो चले तो होगा वो सोचा ना होगा फुट 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 give me some hip hop hip hop hip hop hip just give me some मुझे प्यार तो कर ए हिप हॉपर ए हिप हॉपर मुझे प्यार तो कर ए हिप हॉपर work it girl मेरे प्यार की रिक्शा को मेरे लव की रिक्शा को एक हाथों दोनों सर ए हिप हॉपर मुझे प्यार तो कर ए हिप हॉपर What an infectious performance. I think many of you would be just jumping out to also come on the stage and dance with them. It was a great, synchronized, mesmerizing, beautiful, exemplary, alluring and heart-touching, and a very creative performance with the young students of Punjab Engineering College. Give them a big clap. Going back to describe more about Jaspal Bhatti ji, what he did, Engineer Jaspal Bhatti ji, in 1995, he floated the Hawala party. Bhatti ji announced that he was starting the suitcase party and released the manifesto allotting 5 seats to his family and more seats to be decided based on the size of the suitcase of the prospective candidates. In 2009, the comedian announced that he was floating the recession party and Bhajna Amli, alias Gurudev Dhillon, as his party's face from Ludhiana. In his trademark and satirical style, he kept his party symbol as opium, drugs and alcohol, for which he claimed that there will be no shortage of supply if the party is voted to power. So all his messages, all his satirical style was a great effort towards the social cause. Moving on, Dipanshu. Next, we have a very enthralling drama in store for you, filled with fun and unforgettable memory. So without further ado, let's get the stage and get ready for an extraordinary experience. Presenting to you the students of Punjabi Editorial Board. Please give them a huge round of applause.
जी बोलो की तकलीफ है? हमारा नाम रोशन लाल। अच्छा तकलीफ हो रही है। सामने वाले घर में मिसेस चंपर रहित हैं। तेरी भैन लगती है। ओए ओए असि मैनेज ब्यूरो खोले होगे। सही गल है, मारो बोर्ड बूर्ड पढ़ के आया करो। ये डॉक्टर की दुकान है, एवं रिश्ते चक्की फिरते ने। जी नहीं डॉक्टर साहब, वो का बताए का है ना, वो हमारी बहन नहीं लागत है। नाले आप थोड़ी हिंदी पंजाबी कम बोलो, हमको थोड़ी हिंदी समझ आती ज्यादा। कोई नहीं, हिंदी में बात कर लेंगे। साडी केड़ा जाली डिग्री है। और कहते हैं ना हिंदी के तो हम बात कर देते हैं। उसको बताओ आप। बोलो डॉक्टर साहब का है ना, वो हमको देखा, हम उनको देखा। अच्छा मैं समझ गया, नुक्स तेरी निगाह में है। कोई नहीं, निगाह को भी लोड कर देंगे। नहीं डॉक्टर साहब, का है ना, हमको ना उनसे प्रेम हो गया है। अच्छा और बात का है कि हमको वो कालू कहीं थे। दिक्कत ही नहीं हो। तो फिर यहाँ आने की क्या लोड़ थी? मतलब लेके क्यों करो? और ये तो मेरे को बिजली बोर्ड का मामला लगता है। तुम यूं ही हमारा टाइम खराब कर रहे हो। डॉक्टर साहब, आप ही कुछ कर सकते हो। ऐसा करो, वो मालकन है ना, उसको बड़े गोरे लोग ही पसंद आते हैं। आप हमको गोरा कर दो। अच्छा ये बात है, तुमको चीटा करना है। कोई नहीं, हमने काले कहाँ चीटे करके भेज दिए। क्या लो, पर तुम्हारा केस हमको थोड़ा डूंगाई वाला लग रहा है। नहीं जी नहीं, कर देंगे चीटा। कुमिंगा। हाँ, हो जाओगे तुम, चीटे हो जाओगे। जाओ जाके 3 नंबर अलमारी से 4 नंबर खाने से 5वां कंपार्टमेंट खोल के छठी दवाई ले आओ। जाओ। हाँ भी श्यामला, तो एक तो तुम्हारी शक्ल देख के मेरा श्यामला निकल जाता है। रोशन लाल, देखो तुम शायद चीटे तो ना हो, तुम्हारा मध्यम फर्क पड़ जाएगा। लो भी रोशन लाल, तुम्हारे लिए उजाला की डिबिया, इसको मुंह पे रगड़ा करो, तुम्हारे मुंह पे ग्लो आ जाएगा। ग्लो। हाँ, और इस उजाले को रात को सोने के बाद 2 बार और सुबह उठने से पहले 2 बार लगाना है। तुम्हारा मुंह सूरज वहां लिशकोरे मारेगा। लिशकोरे, जाओ। गोरे हो जाएंगे। हो जाओगे। जी पक्का बताओ, गोरे हो जाएंगे? तो हो जाओगे। जी पक्का जी गोरे हो जाएंगे। तू जानना कि ना? किधर है? पर्ची काट दी है, अब थोड़े पैसे भी काटो। जी धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, धन। आधा किए वो 150 रुपए का पर्ची काट दिए। कंपाउंडर साहब, हमारे पास इतना जी 100 रुपया है। 100 रुपये? डॉक्टर साहब तेरे कौन सा कला 100 रुपया ही है। वो यदि यहाँ पजामा या कितने का होगा? चलो कोई ना डॉक्टर साहब, बेचारा गरीब बंदा है, क्यों पजामा तारना है? मैं कहना अगला मरीज बुलाया। बुला छेती बुला। तो आ जाओ भी, मरीज नंबर 69। आ जाओ भी। कंडक्टर साहब भाई अंदर गल कर यार। कंडक्टर साहब। वो कंडक्टर नहीं डॉक्टर साहब, बह जा, मेरी टक्की फिरता है। खाना भाई, भावे कंडक्टर होवे भावे डॉक्टर, कट जाता पर्ची ही है। बह जा बड्डे सियाने, बोल की तकलीफ है तेनू? तकलीफ डॉक्टर साहब, मैं नहीं बचता डॉक्टर साहब, मैं मर जाना। ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਉਰੇ ਭੈਂਕੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਖਾਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਚਟਪਟੀ ਜੀ ਐਟਰ ਹੋ ਜਾਈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਦ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਨਾਹ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ, ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ, ਪਰਚੀ ਮੇਰੀ, ਉਠਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੜ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ। ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਔਖੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ? ਨਾ
साहब ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ लगता ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ नहीं लगती डॉक्टर साहब ਉਹ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ नहीं आती डॉक्टर साहब ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ हाँ मैं मर गया हाँ मैं मर गया खड़ जा और तू जमी सही थां ते आया है डॉक्टर साहब पर एक चीज का इलाज हैगा डॉक्टर साहब ते रब दा हथ है पूरे तेनू एक बढ़िया सस्ता ते बढ़िया इलाज नहीं मिलना ਉਹ ਐਡਾ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ आयो भी आयो इधर भाई छड़ दे आयो भी 1000 रुपया चलो कोई गल नहीं डॉक्टर साहब आ लो 1000 रुपये मेरा इलाज करता मेरा मीटिंग का टाइम हो चलिया आओ ना मैं बस 1000 रुपये दे गया डॉक्टर 1000 रुपये दे गया 1000 रुपये दी तो भाई 4 बोतल आ गए ਵੱਡਿਆ ਸਿਆਣਿਆ ਲਿਆ ਉਰੇ ਆ सोरे ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ ਆ ਜਾ ਆ ਗਈ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਓਏ ਯਾਰ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੈੱਡਫੋਨ ਜੇ ਲਾਓ ਕੰਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਦੁਖਦਾ ਕੀ ਦੁਖਦਾ ਤੇਰਾ ਕਰੋ ਟੈਸਟ ਕੰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਓ ਟੁੱਟੀਆਂ ना सुझा देख रहे हैं डॉक्टर साहब ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਬਸ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ ਪੀਆ ਕਰ ਉਹ ਇਹ ਕਮੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਕੀ ਪੀਂਦਾ ਮੋਟਾ ਸੰਤਰਾ ਪੀਂਦਾ ਓਹੋ ਮੋਟਾ ਸੰਤਰਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਟੀ ਔਰੇਂਜ ਐਂਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੋਟਾ ਸੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਲਿਆ ਕੀ ਸਿੱਖਣੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੈਮਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਿਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਮਰੀਜ਼ ਲੱਭਿਆ ਤੈਨੂੰ वो आ जाओ भी अगला मरीज आ जाओ ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਰੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਧਾਰਾਂ ਚੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੱਢੇਗਾ ਧਾਰਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾ ਉਹ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਤੇਰੀ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਸੂੜੇ ਪਾਉਗੀ ਉਹ ਬਈ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ये डॉक्टर है जिसने हमारा इलाज गलत कर दिया अब हमसे कौन शादी करेगा ये हमारी शादी हो ना हो इसको जरूर ससुराल पहुंचाएंगे आ की हो गया डॉक्टर कैदी बन गए ते कंपाउंडर हुन डॉक्टर बन गए सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना Indeed, that was a refreshing performance. Now in 3. He is a man whose musical prowess has stood the test of time and his melodies continue to inspire generations. With his soulful voice and impeccable musical talent, Brigadier Harbir Singh from the batch of 1973 is all set to set the stage and leave you mesmerized. So sit back and relax, and I invite sir to please come upon the stage. Please give a huge round of applause.
of the audience because my wife and my sister-in-law is here. The song I'm going to play is "Hai Apna Dil To Awala." Thank you, sir. That was indeed a very refreshing performance. So now, let's plunge into a mesmerizing performance by engineer Sukhdev Singh Bhinder, a close friend and batchmate of Jaspal Bhatti. Sir has set his heart and soul into the role, and his passion will be evident every second. So please cheer him with a huge round of applause. Hello, mic test. Hello. Thank you everyone, respected dear friends, for being here to give tribute to my dear friend Jaspal. We have friendship since '74 and we have spent so much golden, good, humorous time. I cannot explain within 2-3 minutes. जसपाल के मैं क्लास में
लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे। हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, रॉयल प्रोफेसर साहब, जो कि पूरे सेमेस्टर में 20 या 25 लेक्चर लगाते थे। दो तीन लेक्चर के बाद उन्होंने कहना चैप्टर इज ओवर। यार चैप्टर हो चलता कोई नहीं। और आफ्टर 15-20 लेक्चर प्रोफेसर साहब ने कहना सिलेबस इज ओवर, एनी क्वेश्चन? जसपाल ने सर सब्जेक्ट केड़ा हैगा? फिर असं एक बारी 3-4 बंदे नलायक कट्ठे बही बैठा कहते यार अंदर जाकर सीधी बस थोड़ा थले पा रही है गया, कोई भी क्वेश्चन पूछे ना प्रोफेसर कह रहा नहीं आता जी। आई स्टिल रिमेंबर के फ्लूइड मैकेनिक्स वाइवा सी, तीन बंदे बैठे जी, क्वेश्चन पूछते रहे, किसी ने कुछ नहीं आ रही। लास्ट में तंग आ गया प्रोफेसर, कहता यार यू टेल मी नेम ऑफ एनी मशीन। असि दो बंदे कुछ नहीं बोला, जसपाल दी कपड़े सीन वाली मशीन। Very few people know that he was very fond of music and he used to play tabla very well. ये मैं गजल पेश कर रहा हूँ विद इन माई लिमिटेशन, बहुत मुश्किल लगी है। शीतल चंदा कांटे बन गए फूल, प्यार न करना तू किसी से, प्यार है मन की मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम नजर से यकीन हो चला है, न जाने मुझे यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के आंसू, कभी नगमा बन के आंसू। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के आंसू, कभी नगमा बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तड़प पाओगे तुम, क्षमा आई मेरी वफा ने क्षमा दिलाई, मेरी वफा ने बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से।
बेचैन होके दिल थाम लोगे, तू बेचैन होके दिल थाम लोगे। नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन होके दिल थाम लोगे, तो बेचैन होके दिल थाम लोगे। निगाहों में जाएगा उनका अंधेरा, किसी ने जो पूछा सब बातों का, किसी ने जो पूछा सब बातों का। बताना भी क्या हो बता ना सकोगे, मुझे तो नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कहीं भी बुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर एक गजल पेश, एक और मसला छोटी है तो किसी को बाहर में जाने देना, गेट बंद कर दो। एक गजल है जिसने लिखी है, उसका नाम है दुखी नवाब, बट उसने इतनी अच्छी गजल लिखी है अभी। बुलबुल, बुलबुल कहते हैं सिंगिंग बर्ड को, बुलबुल ने गुल से, गुल मीन रोज, रोज का फ्लावर, और उसने क्या इसमें तारीफ की है ये सुनने वाली है। मतलब ना मन करे तभी सुनो, ध्यान से सुनो। बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से कह दिया, बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से कह दिया, एक चौदहवीं के चांद तारों से कह दिया, दुनिया किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं। एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े, भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े, पलकें उठा के देखो तो कलियां भी हंस पड़े, बल्कि उठा के देखो तो कलियां भी हंस पड़े। खुशबू तुम्हारी जुल्फ की फूलों से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो फूलों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार।
बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है दिल में जो फूलों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार moods, sometimes tearful, sometimes angry, sometimes nostalgic, that ultimately love wins. It's love that triumphs, and gratitude for everything you have in life. So today I stand before you full of gratitude and a big thanks to PEC. After his parents, his family, I think the biggest, if there has to be a pinpoint to that, this real, I'm grateful to the teachers who taught him, his college friends who love him even till today, his friends, wives who cherished him so much, the Rajma Chawal of the mess we heard stories about, and I think the biggest right way to say it, he had found the ulta pulta way of looking at things without hurting anyone, without going into obscenity, without going into any double meaning dialogues. So I think without PEC, Jaspal Bhatti would not be the Jaspal Bhatti we all love and cherish. So thank you, PEC. Thank you. Thank you, PECOSA, always for keeping him alive. These evenings, whatever shape, whatever form they take, when there is conversation about him, there's talk about him, he's alive. And thank you, the biggest thank you to the current students, the previous students who have all taken part in these cultural evenings, left their studies and come here. Biggest thanks to all of you for being here and for trying to understand the man called Jaspal Bhatti. We had varied life, and he was happiest going to colleges and universities for his program, because then आप हमेशा ऐसी जगह पे जाते हैं तो आप अपने कॉलेज की बातें याद करते हैं, तो कॉलेज की बातें करते करते वो इतने खुश होते थे. एंड आई रिमेंबर 2-3 उनकी बातें कि जब वो PEC में एडमिशन के लिए आए तो अपने फादर के साथ लाइन में खड़े हुए थे, तो फादर ने सर्टिफिकेट्स पकड़े हुए बड़े नर्वस से कि बेटा हम आ तो गए हैं इधर, बट पता नहीं ये कॉलेज कैसा है. तो साइड में कुर्सी पे एक चपरासी बैठा हुआ था, उसने कहा आप फिक्र ना करिए, बहुत अच्छा कॉलेज है. उन्होंने कहा नहीं, मतलब फिक्र तो हो ही रहा कि मैं अपने बेटे को डाल रहा हूँ, कैसे है. कहते नहीं नहीं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है. उन्होंने कहा आपको इतना कुछ कैसे पता. कहते मैं भी इसी कॉलेज से ही पढ़ा हुआ हूँ. I don't know now whether this is true, but this is what I heard. And the Viva, Sukhdev Veerji mentioned the famous Vivas that happened and students are unprepared. So ऐसा ही एक Viva हुआ जिसमें किसी को कुछ नहीं आता था, तो वो आखिर में जो इन्विजिलेटर थे उन्हें इतना गुस्सा आया, कहते यार तुम लोग इतने डफर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कम से कम मुझे पिलर के स्पेलिंग बना दोगे ना तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा. तो जसपाल जी कहते
PILLAR, उन्होंने कहा PILLAR, नहीं सर PILAR। तो कहते यार तुम्हें पिलर के स्पेलिंग नहीं आते? कहते नहीं सर एक्चुअली दोनों स्पेलिंग ठीक है, एक सिंगल एल से पिलर जरा कमजोर रह जाता है। एंड ऑफ कोर्स द फेमस सरप्राइज टेस्ट्स। सो जसपाल जी बताते थे कि सबकी कोशिश होती है सरप्राइज टेस्ट में कि आप मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे के साथ जाकर बैठो एंड ऑब्वियसली कॉपी फ्रॉम हिम। ही सेड आई यूज्ड टू नोटिस कि मेरे पास हमेशा, या मैं जिसके पास जाता था वो क्लास का सबसे नालायक बच्चा होता था। तो उन्होंने फिर उनको ये यस करते थे, उसके 4 नंबर आए, जसपाल जी के साथ आ गए। सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स ही यूज्ड टू टॉक अबाउट हिज कॉलेज। कॉलेज के बाद जसपाल जी को एक ट्रांसलेटर की जॉब ऑफर हुई। बड़े खुशी खुशी वहाँ चले गए। कहते हैं क्या करना है जी मुझे? उन्होंने कहा आपने उर्दू की शायरी इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। कहते ला मेरी तो इंग्लिश ही बहुत बढ़िया है। कहते बताओ शेर। कहते उन्होंने बताया कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के। जसपाल जी कहते ला लव मेड मी अनएम्प्लॉयड अदरवाइज आई वाज अ मेंबर ऑफ PWD। वो बंदा कहते आप क्या बोल रहे हो, आप दूसरा शेर ट्राई करो। कहते हाँ बोलो बोलो। कहते उनका भी गम है अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है। जसपाल जी ने हंसे। कहते देयर इज देयर सॉरो देयर इज माई सॉरो, आई विल श्योरली डाई टुडे और टुमारो। उन्होंने कहा आप रहने दो, आपसे नहीं होगा ये। कहते नहीं 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 आप मेरे को एक शेर और दो, आई विल जस्ट ट्राई इट। उन्होंने कहा अच्छा बोलिए। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। जसपाल जी कहते हैं सीने में जलन, सम हैव एसिडिटी, आंखों में तूफान, सम हैव आई फ्लू, व्हाई इन दिस सिटी एवरीवन इज इन्फेक्टेड। उन्होंने दरवाजा दिखा दिया। कहते आप तो निकल जाओ। फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में ही वॉज ऑफर्ड अ जॉब। आई थिंक फॉर 1 or 2 years ही टॉट हियर। एक दिन ऐसे ही पढ़ा के बाहर निकल रहे थे तो सामने से कोई आ रहे थे तो उनको देख के कहते अरे तुम्हें मैंने कहीं देखा है, तुम स्कूल में मैं तुम्हें पढ़ाता नहीं था? कहते हाँ जी मास्टर जी मैं ही हूँ। कहते यहाँ क्या कर रहे हो? कहते मैं यहाँ चिट्ठियाँ बांटने आया हूँ सर, मैं यहाँ का इस एरिया का पोस्टमैन हूँ। जसपाल जी कहते शुक्र है, मैंने भी ये सोचा मेरा पढ़ाया हुआ बंदा आज तक तो कॉलेज नहीं पहुँचा। सो ही was so fond of his college that every alumni meet he was here, and slowly after PEC when he entered the world, the real world, I think we all know that that world is so different from what we have in college, but I think PEC had prepared him well. And what fascinated me even till today about him is how उन्होंने कैसे किसी भी चीज़ को, वो किसी भी चीज़ पे रुके नहीं। It was one after another how the discontent, he saw systems failing in India, he saw corruption, he saw inequality, but that discontent, that dissatisfaction in him didn't make him bitter, it didn't make him angry. Instead, he created such a wonderful humorous way of looking at things, but he was just not satisfied being one thing. So initially when he started being the cartoonist for the Tribune, he did that. Then he moved on, साथ में Nonsense Club, which even till today we are trying to keep it alive in Sector 17. He moved on to television, and to his credit, he has the first stand-up in India. If today stand-up comedy is doing so well, and we have been organizing 4 years of Jaspal Bhatti Humor Festival at Tagore Theatre. I have had top comedians of India coming and telling me we owe it to him. The first stand-up comedy act ever done on television was done by Mr. Bhatti, but he was not content with that. He moved to films, he moved to Hindi films. From there, he came back to his mother tongue, wanted to make content in Punjabi, then went on to tutorials on net, जैसे आपने देखा वो चाच बिस्कुट डुबो डुबो के कितना खाना है.
And I think this is a great lesson we can learn, that until unless we don't challenge ourselves, we cannot evolve into a better person. And I remember once he was in Bombay, तो उनके neck में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो जो producer थे उन्होंने suggest किया कि यहाँ बॉम्बे के बहुत जाने माने homeopathic हैं. I mean, it's very difficult to get appointment with him, but we know him, so हम आपसे मिला देते हैं. So वो homeopathic doctor के पास गए, आपको पता है जैसे homeopaths question पूछते हैं, ये कैसे, वो कैसे, सब जवाब देते गए जसपाल जी, ये कैसे है. Then he asked him, he said, आप कुछ नाखुश हैं ज़िंदगी से? So he said, yes, it troubles me. जो कुछ मैं देखता हूँ. अच्छा, आपको कब से है? वो सवाल पूछने लगे तो जसपाल जी stopped him, कहते प्लीज़ डॉक्टर साहब इसकी दवाई मत देना, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है. अगर आपने इसकी दवाई दे दी तो I will sit back content. So that evolution is so remarkable for a man to move from one and to be an expert in everything he did, to be a master in everything. And the other thing that strikes me most about him is the courage he had. Not just the physical courage, but the mental courage to address issues, to say his point, nothing could scare him. No leader, no institution, no establishment could scare him. And he was once at a program where then the finance minister, Dr. Manmohan Singh, was sitting on stage. And Jaspal ji told him कि डॉक्टर साहब आप इतने बड़े बड़े ऑफिशियल्स को IMF में भेजते रहते हो लोन के लिए, इंडिया में से भिखारियों को भेज दीजिए. कहते वो उनकी इतनी टांगे पकड़ पकड़ के लोन ले ही आएंगे इंडिया के लिए. Now that requires so much of courage and conviction to address somebody as learned as Dr. Manmohan Singh. And in 2011, when Anna Hazare ji launched his anti-corruption movement at Jantar Mantar, which gave birth to so many other things, Mr. Kejriwal personally called Jaspal ji saying कि आपने इस movement को आपने start किया हिंदुस्तान में, आपको यहाँ पे होना चाहिए जंतर मंतर में. And Jaspal ji didn't just go like this, he carried with him a small statue, he called it Corruption Devta, and he said कि हमारे अब रगों में इतनी corruption है that we now need temples and we need to worship corruption because this is not going out of our... and to stand there at a national platform, at a national podium and say such a thing required, and it is a courage so many of us don't have today. We lost him in 2012. In 2013, the government of India awarded him the Padma Bhushan, which is an honor, I think, if I'm not wrong, no comedian, no humorist in any language has got from the government of India. And we all believed that this was the end of an era. We believed a vision had gone away. We believed that he had not only physically went away, but he also, something went away with him. But today, 11 years later, I stand here and I want to thank all of you for keeping him alive. He is alive. He has not gone anywhere. When you see MLAs defecting, you see his clip go viral. When you talk of Adani case, you saw the Golgappa scam go viral. So his vision is so relevant, and I know there are millions of people who still love him and who say that this man was so ahead of his times. And a big thank you to everyone, not just here, everybody who's watching from all over the, across the PEC platforms. Thank you for keeping him alive. So I would just request you, please don't say late Mr. Jaspal Bhatti, he's still alive, he's here. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, Savita ji. Once again, we thank you, ma'am. We are really honored to have you here today. Next, we have in store a very mesmerizing and melodious solo song performance by Mr. Simarpreet, son of engineer Harpreet Singh Oberoi, who is currently the secretary of PECOSA from 4th year electrical. Let us all cheer him with a huge round of applause.
किधरे किते निशानो शौकतां जांदियां मोहब्बतां जतालवें किधरे किते नी तेरा रुतबा कटदा जे हस के बुला लवें किधरे चिरां पिछों जदों एहसास होणगे उदों दिलदार नहीं ओ पास होणगे रंगले जहान दियां रौनकां च भी दिल किसे गल तो उदास होणगे हाले भी कुछ सोच लै वे महरमा जे मन समझा लवे किधरे हाले भी कुछ सोच लै वे महरमा जे मन समझा लवे किधरे किते निशानो शौकतां जांदियां मोहब्बतां जतालवें किधरे किते नी तेरा रुतबा कटदा जे हस के बुला लवें किधरे रांझना वे जावां नू गुलाबी रंग दे नित इशरा करा के लंघ दे नादान ना नाराज होण वे ताइयों ते तो इन्ना क इशारा मंग दे हनी भी पाके हसदा छबीलिया जे अखियां मिला लवें किधरे हनी भी पाके हसदा छबीलिया जे अखियां मिला लवें किधरे किते निशानो शौकतां जांदियां मोहब्बतां जतालवें किधरे इनी तेरा रुतबा कटदा जे हस के बुला लवें किधरे खाबा दे ख्यालां नू भी हुंदा शक वे जदों कदे गुस्से च जताउना हक वे रोब तेरे सानू तां हैरान कर दे अखां पाके देखे जदों इक टक वे कि सुपने नू सुपने जो कट के हकीकतां बना लवें किधरे हाँ सुपने नू सुपने जो कट के हकीकतां बना लवें किधरे किते निशानो शौकतां जांदियां मोहब्बतां जता लवें किधरे किते नी तेरा रुतबा कटदा जे हस के बुला लवें किधरे कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले पक्की यारियों यार करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के लखा तो छुपा के रखा अखा च सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लइया यारा ना पावे कदे दूरियां है तेनू
लक्का तो छुपा के रखा अक्खां च सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लइया यारा ना पावे कदे दूरियां मैं जीना हाँ तेरा मैं जीना हाँ तेरा तू जीना है मेरा दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां रातां कालियां 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 ने मेरे दिन सांवले मेरे हानियां 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 जे लगे तू ना गले मेरा आसमां मौसमा दी ना सुने कोई ख्वाब ना पूरा बुने दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाले अख नू मिला के पता है मैनू क्यों छुपा के देखे तू मेरे नाम से नाम मिला के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां थैंक यू People at the back, kindly settle down. Thank you, sir. That was indeed a really heart-touching performance. Next, we have a very electrifying performance that will captivate your hearts and soul. Get ready to be mesmerized by the soul-stirring melodies, the rhythmic beats and the powerful vocals of our Qawwali performers. Let's welcome them on stage with a huge round of applause. check check check
शबाब पे मैं जरा सी शराब फेंकूंगा, किसी हंसी की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा। सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त।
नस विच तेरी याद दा तुम्बा वजदा ए आजा अखियां उड़ीकदियां दिल वज मारदा अखियां उड़ीकदियां दिल वज मारदा आजा परदेसिया वास्ता है प्यार दा आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां सजना तेनू अखियां उड़ीकदियां डोलना तेनू अखियां उड़ीकदियां सजना तेनू अखियां उड़ीकदियां सा 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 रे रे वा 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 सा रे नी सा 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 रे रे पा 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 सा रे नी सा 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 रे रे नी नी सा रे नी सा 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 रे रे सा 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 नी पा नी पा पा मा पा मा मा रे मा रे सा सा नी पा नी पा पा मा पा मा मा रे मा रे सा नी पा नी पा पा मा पा मा मा रे मा रे सा 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 पा नी सा रे नी सा रे मा पा रे मा पा नी मा पा पानी सा रे नी सा तुरुस गयो साडे नाल डोलना जदों दा तुरुस गयो साडे नाल डोलना जदों दा तुरुस गयो साडे नाल डोलना जदों दा तुरुस गयो साडे नाल डोलना वे डोलना जदों दा तुरुस गयो साडे नाल डोलना भुल गया धावा नू बनेरे उत्ते बोलना आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां सजना तेनू अखियां उड़ीकदियां डोलना तेनू अखियां उड़ीकदियां सजना तेनू अखियां उड़ीकदियां डोलना तेनू अखियां उड़ीकदियां सजना तेनू अखियां उड़ीकदियां डोलना तेनू अखियां उड़ीकदियां सजना तेनू अखियां उड़ीकदियां What a divine performance by this fantastic and brings closer to the God. That's what it means, and they gave a beautiful performance here. So once more, a big clap for them, for the entire troupe who performed in front of you. Moving on, I would now request the director of the institute, Professor Dr. Baldev Sethia, to say his few words of wisdom for all of us at today's event. Dr. Professor Baldev Sethia joined us as a director in August 2021. He carries with himself almost more than 35 years of experience in teaching, research, consulting, and administration. Dr. Sethia joined us from NIT Kurukshetra, where he was professor in civil engineering since 2006. He was awarded PhD by IIT Kanpur in 1998. He has published more than 170 research papers. He had been member of the governing council of various institutes of eminence like IIIT Sonipat and U. Please give a big hand for your own director, Dr. Sethia. Professor Renu Vig, Vice Chancellor of Punjab University, and our chief guest today, Mrs. Savita Bhatti, our guest of honor, Engineer T.C. Bali, President of PECOSA, Engineer Harpreet Singh Obroy, Secretary, esteemed members of the faculty, illustrious alumni, dear students, ladies and gentlemen. First and foremost, I take this opportunity to welcome you all to this wonderful, august, and memorable evening. I'm extremely delighted to be associated with this Engineer Jaspal Bhatti cultural evening. Believe you me, in this hall, I've seen number of programs ever since I joined, but this has been by far
the most loving, memorable, and a wonderful program. A huge round of applause to PECOSA and the students. Well, ladies and gentlemen, our chief guest today, Professor Renu Veg, we all know that she is an alumnus of this institute, graduated in the year 1985 from the Department of Electronics and Communication Engineering, and now she is the Vice Chancellor of Punjab University, Chandigarh. Well, it means a lot. It speaks volumes to be the Vice Chancellor of such a big university, one of the oldest and most reputed universities of the country. We are also proud that she is the first women Vice Chancellor of the Punjab University. On behalf of PECOSA, and on my own behalf, I extend a very, very warm welcome to Professor Renu Veg. In the same breath, I come forward to welcome to the portals of this institute. I know she has been an integrate member of this PEC family, extended family. But I know ever since I joined, this has been her first visit, and I take this opportunity to welcome Mrs. Savita Bhatti to the portals of this institute and to this hall where Engineer Jaspal Bhatti has performed. She herself has been a wonderful artist, a producer of a varied personality, moving on not only from the field of arts. She is a person of literature, having done so much not only from the Punjab University but also from the schools and colleges of Delhi. Well, I must compliment the organizers of this program. Whatever I say must be short of what I want to say. It's been a wonderful arrangement, organization by PECOSA. And through T.C. Bali sir, I would like to extend this gratitude to him. The collection of the works of Engineer Jaspal Bhatti, which was presented in the form of a series, I tell you, it takes you back to the times. And I was sitting here and enjoying that show as if I was moving through a time capsule. I must also compliment the students who have put in a wonderful show. The last Qawwali, believe you me, I was taken back to my school days when I saw this movie and this Qawwali. It was a wonderful collection, beautifully put, and all applaud to these people. Well, ladies and gentlemen, I have been an ardent and a very big fan of Engineer Jaspal Bhatti. We all belong to the same cult. In fact, I must have seen all his movies and all his shows numerous times. In fact, the ones which were shown, I know because of the paucity of time and for the sake of arrangement, we have to have some set of these shows. Was it Ulta Pulta, Flop Show, Full Tension? I had been following everything, not only I, but all my friends, all those who are close to me, my family, we all used to enjoy these shows like anything. I don't need to elaborate on that. And the parties that he floated, was it the suitcase party, or the Hawala party, or the session party, we all know how awakening or what kind of awakening it had brought in. I remember the year 1989, when Engineer Jaspal Bhatti had come to NIT Kurukshetra. At that time it was REC Kurukshetra, and he had been invited there as the chief guest of our inter-college function, Confluence. I was there very close to him and trying to get a better and better glimpse. And in the evening, can you beat it, the kind of discussion that went on? I had already joined teaching,
but still we were very big fans of Jaspal Bhatti ji. And people were saying, मैंने भी हाथ मिलाया. And believe you me, today and even prior to these days, I still remember कि छोटी सी बात है, लेकिन मुझे भी बहुत आनंद आया क्योंकि मैंने भी हाथ मिलाया. Well, dear friends, today sitting here, I was reminded of one couplet which somehow, I don't know whether it, because he was the one, that there is so much in humor, there is so much in satire. That is what was started by engineer Jaspal Bhatti. एक कपलेट था कि कोई एक गुंचे से बात कर रहा है, फूल से बात कर रहा है कि ए गुंचे तेरा जीना भी क्या जीना है कि एक तबस्सुम के लिए तू खिलता है, स्माइल. ए गुंचे तेरा जीना भी क्या जी मोशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, जरूरी नहीं लंबी हो. So he was that man. His jokes, his one-liners, and whatever he did, that was wonderful, remarkable. Throughout this evening, we have been hearing that. I know, don't need to repeat that, but there were a number of jokes which were coming across my mind. In Kurukshetra also, when he came, I remember the kind of jokes that he told. They were between the relation between the teacher and the student. When he said कि टीचर की चमचागिरी करने के लिए कभी कभी वो भी करते थे हम एज स्टूडेंट्स. कहता सर हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट, कहता जी मेरे को तो बड़ा डर लगता है, उसके तो न्यूमेरिकल मैं रबड़ की चप्पल पहन के करता हूँ. एंड देन समथिंग है, टीचर को देखे, सर आप नीचे, ओहो कमाल है, आओ ना घोड़ी पे आप बैठो. So I can go on, and everything is just flashing upon my remembrance to engineer Jaspal Bhatti ji. Some of you might be aware that we have done some spade work in this regard. Naming of the auditorium cannot be announced at this stage, but what can be announced in the honor and remembrance of engineer Jaspal Bhatti is something that's been decided. And I take this opportunity to announce that, and that is just opposite to the door of this hall. In this very premises, on this floor, we are going to install a bust of engineer Jaspal Bhatti ji, though of course with the permission of the family. In fact, some spade work has already gone into it, and very soon you will have a beautiful bust of our very beloved, very dear engineer Jaspal Bhatti ji. Well, with these words, once again, I lay my tribute to engineer Jaspal Bhatti ji and wish that we keep his memory, his works alive in the times to come. Thank you. Thank you very much. Thank you, Professor Dr. Baldev Sethia ji, for your experiences which you had it in Kurukshetra and otherwise, and your announcement of installing this bus. I think this is the best decision of yours, and which keep us, Engineer Jaspal Bhatti, around us all the times. Thank you very much. Moving on, I would now like to invite General Secretary PECOSA Harpreet Singh Oberoi to come and do the honors of honoring our guests who have been there with us this evening so far, and also a ritual of scholarships distribution to the students of this college. Over to you, Harpreet. Thank you, Sandeep ji. Good evening, everyone. Today we have with us our Vice Chancellor of Punjab University, Dr. Professor Renu Ved, Director PEC, Dr. Baldev Sethia ji, PECOSA President, Engineer T.C. Bali ji, Dean Alumni, Professor Rajesh Kanda ji, my colleagues in the our distinguished alumni, and Engineer Sanjeev Bhavnani ji, our Padma Bhushan, Engineer Jaspal Bhatti ji. He is a
still I will also second the opinion as conveyed by his wife. He is still live, and he is live in our mind and in PEC. Now, going forward, I will like to request our chief guest to come on stage, Engineer Renu Vijji, and along with I will also request Director PEC to come on stage, and also along with them I will request Engineer T.C. Baliji to come on stage, please. Thank you. A big round of applause for PEC, please. We are proud to be associated with PEC. Now in Chandigarh, we have Administrator to the Governor, Engineer Dharampal ji. We have SSP Chandigarh, Engineer Kamardeep Singh Kaur, and now we have VC Punjab University, Dr. Renu Vijji. I will request Director Sir to felicitate our chief guest of the evening. A big round of applause, please. Now, thank you, sir. I will like to request Mrs. Savita Bhatti to come on stage. She will be felicitated by our Vice Chancellor, Punjab University, along with Director PEC and President PECOSA. PEC is also felicitating, along with this, a coffee table book which has made on the occasion of 100 years of PEC. Now I will request our Honorable Chief Guest to felicitate our Director Sir also. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. I will also request Dr. Professor Rajesh Kanda to come on stage, please. A big round of applause for Dr. Kanda, sir. He is also PEC alumni of 1991, gold medalist of mechanical engineer. Now I will request the class fellows of Jaspal Bhatti, Engineer Ashok Prashar, Engineer Ashok Bansal, and all other class fellows to come on stage. They will be also felicitated. Along with them, I will also request Engineer P.D. Sandhu ji to come, as he is of this show, and he has made this show possible with his. Engineer Ashok Prashar ji, Engineer Ashok Bansal ji. We have for everyone, please. We have a word for everyone.
Thank you, ji. Thank you, sir. Thank you. Now, I will like to inform everyone that out of the corpus, now today as on date, PECOSA has a corpus of 2.67 crore. From the interest of corpus and with the contribution of other alumni, we are honoring our brilliant students. Although all the students are brilliant, those criteria set up by the various alumni who are our sponsors. First of all, I will request for the Nirmal Bhatia scholarship, Aryan Sharma. Aryan Sharma. This scholarship has been offered by Engineer Anil Bhatia, 1993 Electronics. He has given a scholarship of 15,000 each to 2 students in the memory of her late mother, Nirmal Bhatia. Then Subandhu Rai. Then we had PECOSA Sydney prizes. From the interest of corpus, we have received Ghazalveer Kaur, Civil Engineering, Anchraj Sharma, son of Yograj Sharma, Computer Science and Engineering, Lakshya Jindal, Electrical Engineering. Then we have Harjeet Singh Oberoi Scholarship for Girl Students, Srishti, daughter of Gagandeep Garg, Electrical, 8.86 CGPA. Then we have Shamsher Singh Atri Scholarship for the toppers, Aryan Chaudhary, Tavish Konwar and Sanchit Garg. Then we have toppers of the BTech third year, 6th semester, 2019 batch, PECOSA scholarship prize from the interest of corpus. First is Maneet Kaur, Aerospace Engineering. A big round of applause for all these brilliant students. Rishi Panjola, Civil Engineering. Mohammad Atif Siddiqui, Civil Engineering. Navya Agarwal, daughter of Sanjay Agarwal, Computer Science and Engineering, 9.67 CGPA. Akansha, daughter of Adish Kumar Jindal, Electrical Engineering. Then we have Saksham Arora, son of Rakesh Kumar, Electronics and Communication, 9.7 CGPA. Then we have Sahajveer Singh, Mechanical, 9.43 CGPA. Piyush Gulati, Metallurgic and Material Engineering, 9.54 CGPA. Then we have Vasudha Agarwal, Production and Industrial Engineering. Then we move on to Dr. Rooplal Jindal Memorial Award for the 5 brilliant students of first year Civil Engineering, and a total of 1.151 lakh has been given by her daughter Shinku Sharma. She is presently at US, and I would like to inform you Dr. Rooplal Jindal has been residing in US. Prior to that, he was a professor of civil engineering of this college only, and he has kept his memories alive even after his death. His daughter Shinku Sharma from US specially called one of the colleague, engineer Ashok,
Bansal, big round of applause for him, who motivated her to give the scholarship of 6.5 lakh. And the students which Rishabh Tripathi, Balkishan Singh Sohal, Balkaran Singh Sohal, son of Gurinder Singh. Apart from this, I would like to inform the House that PECOSA has given total scholarship of 14,15,000 till the announcement of this new committee. Out of this, 1968 global alumni has contributed 4.48 lakhs. Then we had Padma Awards, 50,000 each, 1973 batch award 50,000 and 1961 batch books and 90,000, which have duly given by the PECOSA to the college authorities for the distribution to the students. Now, thank you, sir. I will request our honorable chief guest to say a few words of wisdom, please. Thank you, ma'am. नहीं कम कर देंगे. Let's welcome the chief guest for the evening, Professor Dr. Engineer Renu Vig. She is currently the Vice Chancellor of Punjab University. Prior to this, she has held several key positions in Punjab University, being the Dean University Instruction, Dean Research, Dean Faculty of Engineering and Technology, and Director UIET. With a teaching and research experience of more than 35 years, Professor Renu Vig holds a PhD in Engineering and Technology in the area of Artificial Intelligence and Neural Networks. I'll cut short a little bit. In addition to academics and research, the exemplary contribution she made during sabbatical project undertaking in Infosys Technologies earned her appreciation letter from Dr. M.P. Ravindra, head Infosys. Thank you, Professor Dr. and Engineer Renu Vig, and for her kind words to all of us. Thank you. Director, Punjab Engineering College, Mrs. Savita Bhatti, alumni of Punjab Engineering College, their spouse, students and faculty of PEC. I would say my journey in the field of engineering started in 1979, when after completing my matriculation, I took admission in Government College for Girls, Sector 11, Chandigarh. And when I went to take admission, I remember my parents and everybody thought that when I was taking admission, the teacher over there, you know, she just casually asked me, "You like biology?" I said, "No, I don't like biology." So she says, "Then why you have to do this biology? So what do you like?" She asked me. I said, "I like maths." So she says, "Then you should do maths." Then I said, "What should I do?" She says, "Biology काट के maths लिख दो." So that's what I did. And then September में mid semester mid year exams होते थे, और जब मिड ईयर एग्ज़ाम्स होने थे, सो आई गेव अ लिस्ट ऑफ बुक्स टू माई फादर कि ये बुक्स मुझे ला दो. एंड देन ही गॉट द बुक्स फॉर मी एंड ही सेड कि इसमें बायोलॉजी की बुक का नाम तो तुमने लिखा नहीं है. एंड आई टोल्ड हिम कि बायोलॉजी तो मैंने लिया ही नहीं है. एंड ही वॉज यू नो शॉक्ड कि बायोलॉजी तो लिया नहीं है, तो फिर अब करना क्या है. तो अब मैथ्स की बुक क्यों मंगवाई है. मैंने कहा मैंने तो मैथ्स ले लिया. एंड आई रिमेंबर यू नो माई पेरेंट्स, कोई मतलब एटलीस्ट फॉर अ मंथ हमारे घर में मेरे पेरेंट्स यही चर्चा करते थे कि अब ये लड़की क्या करेगी, इसने बायोलॉजी तो लिया नहीं है, डॉक्टर तो बन नहीं सकती है. तो बट दे वर लाइक यू नो कि आई हैव रूइंड माई करियर बाय ऑप्टिंग फॉर मैथ्स. एंड माई मदर वॉज अ स्कूल टीचर, सो देवर कि ठीक है, फिर कुछ ऐसे बीएससी एमएससी मैथ्स करके पीएचडी बीएड करके मे बी यू नो शी विल ऑल्सो हैव टू बी अ स्कूल टीचर एंड समथिंग लाइक दैट. बट दे वर रियली डिसअपॉइंटेड कि मैंने बायोलॉजी नहीं लिया एंड आई कैन नॉट बी अ डॉक्टर. और फिर 81 में आई रिमेंबर व्हेन आई केम हियर फॉर एडमिशन टू पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑन दिस वेरी स्टेज द टीचर्स वर सिटिंग 30 students. And probably in the first year,
around 250 students were admitted. And after I got the admission, then, in the morning, this counseling for admission was there, and in the afternoon, we were supposed to deposit the fees. Or principal office used to be where now we have committee room, and when we go towards principal office, there used to be this window where we had to deposit the fees. And मेरा ख्याल है कि 500 rupees was the fees, and my father asked me, do I deposit your fees? And मैंने पूछा कि मतलब अब आपको क्यों डाउट है कि फीस जमा करानी है कि नहीं करानी है? And he told me कि will you be able to do this? ये तो मुझे लड़कों का कॉलेज लग रहा है और यहाँ पे कैसे पढ़ोगे तुम 4 साल? तो मैंने कहा कोई नहीं, आप फीस तो जमा कराओ, तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है. एंड रियली दैट वाज द टाइम कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में 1000 बच्चे थे तो लड़कियां तो शायद अराउंड 30 ही थी, और लड़कियों का कोई व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, चावला वाज इन फाइनल ईयर, आई वाज अ डे अंडरस्टैंडिंग हुई कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियां पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहेंगी. तो पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, सरोजनी हॉल हॉस्टल में लड़कियां रहती थीं, तो एक कमरे में 3 लड़कियां रहती थीं. और जो हमारी कॉलेज की प्रॉब्लम है वो ये है कि फर्स्ट ईयर में ही इंजीनियरिंग ड्राइंग करनी होती है, और वो जो ड्राइंग शीट्स बनानी पड़ती हैं शाम को और रात को, तो 3 लड़कियां अगर एक कमरे में हो तो वो ड्राइंग शीट्स कैसे बनाएंगी आफ्टर द कॉलेज आवर्स इन दी हॉस्टल? वो तो पॉसिबल ही नहीं था. तो फिर लड़कियों ने ये इशू फिर से रेस किया कि ये मतलब इतनी ड्राइंग शीट्स तो 3 लड़कियां एक कमरे में रह के नहीं बना सकती हैं. तो 11 सेक्टर में था एक वर्किंग वीमेन हॉस्टल था, तो फिर लड़कियों को वहाँ एडजस्ट किया गया. तो वो समय था कि हम साइकिल पे कॉलेज आते थे, और कोई ये फ़ोन वगैरह तो नहीं होते थे जो आजकल हैं सब बच्चों के पास. तो वो वक्त ही बहुत डिफरेंट था. मगर यहाँ पे वाइवाज वगैरह की बात हुई, तो ये मेरे ख्याल से हर बैच में कुछ ना कुछ ऐसे वाइवाज होते थे. और आजकल क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में सारे क्लास फेलोज कनेक्टेड हैं, तो ये जोक्स हर बैच के ही हैं. और हमारे बैच का भी एक जोक है कि वो एक हमारी लैब होती थी जहाँ मोटर्स पे एक्सपेरिमेंट करते थे, डीसी मोटर, एसी मोटर. तो वाइवा में हमारी क्लास के बच्चे को टीचर्स ने पूछा कि अगर डीसी मोटर को एसी सप्लाई दे दें तो क्या होगा? तो पहले तो वो लड़का चुप रहा, तो फिर टीचर ने पूछा कि अगर डीसी मोटर को एसी सप्लाई से कनेक्ट करें तो बताओ मोटर चलेगी कि नहीं चलेगी? तो कहता चल तो जाएगी पर वो बात नहीं बनेगी. तो ये हम जब भी बैठते हैं यही बात होती है कि वो बात नहीं बनेगी. तो ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती उस समय भी होती थी. आज बच्चों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी. मुझे याद है कि जब मैं यहाँ पढ़ती थी तो हमारे तब भी एक एनुअल मैगज़ीन थी जो पब्लिश करते थे, जिसमें बच्चे अपनी पोएम्स और स्टोरीज़ वगैरह पब्लिश करते थे. तो मेरी क्लास फेलो थी मोनिका नाथ, वो एडिटोरियल बोर्ड में थी. तो उसने कहा कि हम स्टोरी करेंगे ऑन द फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट ऑफ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज. तो उस समय ईमेल वगैरह कुछ नहीं होता था, और ये मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे, और लैंडलाइन फ़ोन पे भी मतलब वो फर्स्ट फीमेल इंजीनियर ऑफ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज तो अमेरिका में सेटल्ड थी, तो उससे फ़ोन पे बात करने का भी कोई रास्ता नहीं था. तो उसका एड्रेस, हमारे टीचर होते थे फिज़िक्स के प्रोफेसर पुरी, तो उन्होंने कहीं से उसका एड्रेस चेंज किया. तो हमने क्वेश्चनेयर बनाया कि उसको बाय पोस्ट क्वेश्चनेयर भेजा कि व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज एंड हाउ योर प्रोफेशनल जर्नी हैज़ बीन, एंड देयर वर सम क्वेश्चंस लाइक दैट. तो काफ़ी दिन के बाद मोनिका नाथ ने अनाउंस किया कि वो फर्स्ट फीमेल इंजीनियर के आंसर्स जो हैं वो हमें आ गए हैं. जो क्वेश्चनर हमने उसको भेजा था उसने जवाब दे दिए हैं. एंड यू नो व्हाट, वो फर्स्ट फीमेल इंजीनियर जो थी, शी सेड दैट डॉक्टर बाय प्रोफेशन, शी गॉट मैरिड टू अ डॉक्टर, शी वेंट टू USA, and then she did MBBS there,
and she became a doctor. तो जहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी हम वहीं पहुँच गए कि वो इंजीनियरिंग करके भी डॉक्टर बन गई. पर मैं ये कहूँगी कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने सिर्फ इंजीनियर्स ही प्रोड्यूस नहीं किए हैं. आपने देखा कि एक तो डॉक्टर भी प्रोड्यूस किया है, बट बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स प्रोड्यूस किए हैं. बहुत सारे मेरे क्लास फेलोज थे जिन्होंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम्स दिए और ज्वाइन भी किया उसको. तो आज भी जैसे मैं 1985 बैच की हूँ, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं धर्मपाल, वो मेरे बैच के ही हैं. वी वर क्लास फेलोज, बोथ ऑफ अस आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज. और जो विजय जंजुआ हैं इस समय चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वो भी हमारा क्लास फेलो है. और जब मुझे वाइस चांसलर का ऑफिशिएटिंग चार्ज मिला तो मुझे इतने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के एलुमनाई के फ़ोन आए कि मैं बता नहीं सकती आपको कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, हर जगह से मुझे फ़ोन आए. मेरे हस्बैंड को फ़ोन आए कि वी आर सो प्राउड एलुमनाई ऑफ पंजाब इंजीनियर. मतलब ही इज़ एक्सपेक्टेड टू बिकम चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका सून. तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने बहुत से ब्यूरोक्रेट्स प्रोड्यूस किए हैं. और एक यूनिक जो हस्ती पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने प्रोड्यूस की है वो इंजीनियर जसपाल भट्टी जी हैं. और मैं ये कहूँगी कि जब when he must have started doing all this on this very stage, it must have been his hobby, or he had that, you know, creativity in him that he could do all this, that he could generate this comedy from, you know, whatever bad practices we have in our society. And he was not even sarcastic, but he did it in a very funny way, all these things. So I'm sure this was his hobby, but then, you know, somewhere along his journey, this became his profession. He was there on the television, then in the movies. And while I was watching performance of the present students here, that was also very professional. So I was thinking that, you know, whatever hobby you have, don't leave it when you become a professional. Pursue it. Maybe, you know, that becomes your profession someday. Or even if doesn't become a profession, it can just be a hobby, and it can be a stress buster for you and your friends in the long run. So when I joined Punjab Engineering College, I never thought that I'm going to be Vice Chancellor of Punjab University someday. And when Jaspal Bhatti ji was doing all these things on the stage of this college, I am sure he never thought that he is going to, you know, reach at this level where, you know, he would be known worldwide. But I guess Punjab Engineering College ने जो हम सबको सिखाया है, वो यही सिखाया है कि जो भी करो, put in your best, do it to the best of your ability. So we only have to try whatever we are doing, that we do it to the best of our ability. And whatever is the result, that is actually not in our hands. So whatever is in your destiny, that will definitely happen. But if you give in your best, then I would say you are successful. Whatever you may get, but if you have been an ethical person, if you have a strong character, if you have done noble things in your life, if you have put in your best, then you are definitely a successful person. So that's what I expect that young students sitting here will do in their lives, that put in your best, whatever you do, and leave it to God. Whatever is best for you, that God will definitely give you. Wish you all the best.